नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सारथी सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम मित्रों हार्दिक स्वागत है। तो आजना विडियोनी अंदर धोरण 11 विज्ञान प्रवाह और सामान्य प्रवाह मतलब के आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस त्रे त्रणनी अंदर धोरण 11 विषय संस्कृतनी अंदर शैक्षणिक वर्ष 2024-25 थी जे नवुं सुधारेलुं प्रश्नपत्रनुं माळखुं अमलमां आवेलुं छे एना विषे आजे आपणे चर्चा करवाना छीए। तो आ विडियो ने स्कीप कर्या वगर अंत सुधी जोता रहेजो। चेनल पर नवा हो और हजी सुधी चेनल ने सब्सक्राइब न करेली हो तो सब्सक्राइब करी लेजो। तो सौथी पहला अहीं आपणे वात करीए हेतुलक्षी प्रकारना प्रश्नोनी। तो हेतुलक्षी प्रकारना प्रश्नो टोटल 15 मार्कना पूछाशे। टूंक जवाबी प्रश्नो 20 मार्क्समां, टूंक जवाबी प्रश्नो 2 3 मार्कनी अंदर अने विस्तृत जवाबी प्रश्नो जेने आपणे लॉन्ग आंसर कहीए एवा 12 मार्कना टोटल प्रश्नो पूछावाना छे। અને તમારું ધોરણ 11 ની અંદર સંસ્કૃત વિષયનું પ્રશ્નપત્ર ટોટલ 50 માર્ક્સનું આવશે, પાસિંગ માર્ક 17 અને સમય મળશે 2 કલાકનો। હવે અહીંયા તમને ચેપ્ટર વાઇઝ ગુણભાર આપેલા છે કે પ્રથમ પરીક્ષાના અભ્યાસક્રમની અંદર ટોટલ કેટલું પૂછાવાનું છે અને કેટલા માર્કનું પૂછાવાનું છે। તો એ અનુસાર પહેલું જે આપણું વેદામૃતમ નામનું કાવ્ય છે, વેદામૃતમ નામના જે શ્લોક છે એ 4 માર્ક્સની અંદર પૂછાશે। पछी विना वृक्षम गृहम शून्यम 4 मार्क्सनी अंदर। एना पछी त्रीजू वर्षावर्णनम 3 मार्क्स। एना पछी चौथू दशकम धर्मलक्षणम 4 मार्क्स। एना पछी 5 भस्मावशेम मदनम चकार, भस्मावशेषम मदनम चकार 3 मार्क। एना पछी पृथुचरितम 4 मार्क्स। 12 नंबरनु किंतो कुटिलता 4 मार्क्स। एना पछी हनुमद भीमसेनयो संवाद 3 मार्क। एना पछी चतस्त्रो विद्या 4 मार्क्स अने ननु वणितोसी 3 मार्कनी अंदर मतलब के 1 થી 5 श्लोक अने 11 થી 15 पाठ। आटली वस्तु तमने छे ई पाठ्यपुस्तकनी अंदरथी पूछावानी छे। हवे व्याकरण विभाग, तो के साहेब व्याकरण विभागनी अंदर पण तमने घणुं बधुं पूछावानुं छे, जेमांथी 2 मार्कनी अंदर न्याय, 2 मार्क में छंद ने अलंकार, संस्कृत साहित्यनो इतिहास जे आपणा पाठ्यपुस्तकनी पाछळ छेल्ले आपेलो छे एमांथी 6 मार्कना क्वेश्चन अने अपठितमांथी 4 मार्क्सनुं पूछाशे। आवी रीते 50 मार्क्सनुं प्रश्नपत्र रहेशे। हवे साहेब विभाग एनी अंदर आपणे वात करी हती के विभाग एनी अंदर काव्यमांथी, पछी पाठमांथी, व्याकरण विभागना बधा प्रश्नो आपणे पूछावाना छे। तो एमांथी आखुं माळखुं शुं रहेशे? तो सौथी पहेला आपणे वात करीए प्रश्न क्रमांक 1 અને 2। कोई पण एक है ये पद्यखंडनु तमारे मातृभाषा में अनुवाद करवानुं छे। पद्यखंडनो मतलब शुं थयो? तो के साहेब एक श्लोक आपेलो हशे अने ए श्लोकनो तमारे भाषांतर करवानुं छे। केटला मार्कनी अंदर? तो के बहु अगत्यनुं 4 ज लाइन हशे श्लोकनी, 4 ए 4 लखी नाखो એટલે 4 मार्क तमारा फाइनल। एना पछी विवरणात्मक नोंध अथवा तो विवरणात्मक नोंध मतलब के एकना अथवामां एक प्रश्न आपेलो हशे, कोई पण एक लखवानी है पण नोंध केटली आपी है? 2 आपेली है अने स्वाभाविक वस्तु है कि भाई एक लखवानी है એટલે 2 मार्कनी थई। एना पछी श्लोक पूर्ति, 2 श्लोक पूर्ति आपेली है अने एमांथी लखवानी है 1 मार्क थशे 2। जो अहीं आपे छे श्लोक पूर्ति अथवा श्लोक पूर्ति मतलब के अथवामां प्रश्न आपेलो हशे। एना पछी 5 અને 6 2 मार्कनी अंदर नीचे आपेला विकल्पमांथी योग्य विकल्प शोधी अने साचो जवाब लखो, दरेकनो 1 मार्क। टूंक में एमसीक्यू टाइपना क्वेश्चन थई गया। आ वस्तु थई आपणे श्लोकमांथी। हवे वात करीए विभाग बी। तो विभाग बी जे छे ए विभाग बी नी अंदर तमारे गद्यखंड पूछाशे। गद्यखंडनो मातृभाषामां अनुवाद करो कोई पण एक मतलब के 2 आपेला हशे एमांथी एकनो भाषांतर तमारे पेरेग्राफनुं करवानुं रहेशे 4 मार्क्सनी अंदर। एना पछी सेम टू सेम विवरणात्मक नोंध केटली आपेली हशे? तो के साहेब 2 आपेली हशे, तमारे लखवानी छे कोई पण एक, 2 मार्क थशे एना। एना पछी रिक्त स्थानोनी पूर्ति करो, खाली जग्या थई, प्रत्येकनो 1 गुण मतलब के 2 खाली जग्या पूछाशे पाठमांथी। एना पछी 13 અને 14 नीचे आपेला विकल्पमांथी योग्य विकल्प शोधी अने जवाब लखो। एमसीक्यू टाइपना क्वेश्चन थया केटला? तो के 2, ऑप्शन कोई एमां हशे नहीं। हवे आई गयो विभाग सी। गद्यखंड वाँची नीचेना प्रश्नना जवाब लखो, जेने आपणे कही शकीए के भाई आम लेखन प्रकारना प्रश्नों अने अर्थग्रहण आधारित आखो विभाग। तमारा पेरेग्राफ वाँचवानो, पेरेग्राफ वाँचीने जवाब लखवानो। 4 प्रश्नों आपेला छे, केटला? 4 प्रश्नों अने बहु इजी, मार्क स्कोर करावे एवुं। पछी आपेलुं छे समीक्षात्मक नोंध, 2 आपेली छे, एमांथी कोई पण एक लखवानी छे 2 मार्कनी अंदर।
પછી સંદર્ભ સમજાવવાનો છે, કોઈ પણ એક, 2 આપેલા હશે, એક સમજાવવાનો. એના પછી વાક્ય કોણ બોલે છે એ ઓળખવાનું, દરેકનો એક ગુણ, મતલબ કે 2 પ્રશ્નો આપેલા હશે. એના પછી આપેલું છે વિભાગ ડી, ગદ્યખંડ વાંચી નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખો જે અપઠિત ગદ્યાંશ કહેવાય, 3 માર્કની અંદર પૂછાશે. એ તમારા પાઠ્યપુસ્તક 12નો પેરેગ્રાફ હશે. રાઈટ, 4 પ્રશ્નો છે, એમાંથી કોઈ પણ 3ના જવાબ લખવાના, એટલે 3 માર્ક થઈ ગયું. એના પછી કોઈ પણ 2 તમારે ગુજરાતી પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે, જે તમારા પાઠ્યપુસ્તકના જ હશે. ગુજરાતી પ્રશ્નોના જવાબ આપો, કોઈ પણ 2, પ્રત્યેકના 2 ગુણ, એટલે 4 માર્ક થયા. અને રિક્ત સ્થાનોની પૂર્તિ કરો, મતલબ કે ખાલી જગ્યા પ્રકારના પ્રશ્નો છે એ પ્રત્યેકનો 1, મતલબ કે 3 જેટલી પૂછાશે. આ ઉપરાંત આપણે વિભાગ ઈની વાત કરીએ તો હવે અહીંયાથી ટોટલી ગ્રામર બેઝ આખો વિભાગ થઈ ગયો. પહેલાં તો પરિચયાત્મક નોંધ જે આપણે સંસ્કૃત સાહિત્યમાં આપેલી છે એમાંથી, પછી છંદ અને અલંકાર કોઈ પણ એક પૂછાઈ શકે 2 માર્કની અંદર. પછી નીચે આપેલા વિકલ્પમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ ગોતી અને જવાબ લખો 4 માર્કની અંદર. તો આખો વ્યાકરણ બેઝ થઈ ગયું. અને અભ્યાસક્રમ મેં તમને અગાઉ કહી દીધો છે કે ભાઈ જૂનથી સપ્ટેમ્બર સુધીનો 1 થી 5 પાઠ અને 1 થી 5 શ્લોક અને 11 થી 15 પાઠ. પછી ન્યાય, છંદ, અલંકાર, સંસ્કૃત સાહિત્યનો ઇતિહાસ, એમાંથી થોડા ઘણા પ્રશ્નો પૂછાશે. તો આવી રીતે તમારે સંસ્કૃત વિષય જે છે એ સંસ્કૃત વિષયનું સંપૂર્ણ રીતે પ્રશ્નપત્રનું માળખું આ પ્રમાણેનું રહેશે. જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરી દેજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાની બાકી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. મળીએ છીએ નવા વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.